Some people might have just started the painting out of that thought that chalo, let us do something creative painting just to unwind themselves. That is also fun. So not necessarily that you have to have same thing in mind that chalo हमको painting करोड़ में sell करनी है. So fruit will follow if you do karma. यहाँ पे सीनियर आर्टिस्ट है हमारे हाँ. See this basic creative process in life. That is the purpose of life. That you enjoy doing something, creating something. The purpose of art, creative art ends there. The enjoyment of creativity personally for an artist, whether it's music, dance, whatever. That basic enjoyment is the purpose of art. Rest of the things, commercial things happen after that first stage. So, basic purpose is to create and enjoy. Exhibitions, awards, ceremonies, these are after effects of that basic creative thinking. So, enjoy doing what you're doing. See, in the last 2 years, Art Carnival started. It was started, as I said earlier, also with the mission of creating some platform for the artist in a very affordable kind of way. There are many artists who may not be doing full-time art. For them, it becomes very difficult to find the platforms in the metro cities. तो अभी 2 साल में हमारे ये 10 शो हो गए. This is, I think, second in this year. So from the beginning itself, response is fantastic. Shows are almost full to the. We have to stop the the booking for the Art Carnival every time the show is there. That shows that there are so many artists, so many rather creative enthusiasts. I can say some. I think we have the example here. One of our Sunil sir's student. That madam is here.
she is participating as well as learning there. So as I said कि learning is a lifelong process. तो वो शुरू रहता है. इन आर्ट कार्निवल में ऐसा है ना कि ये 2 साल में हमने जो किया है बॉम्बे आर्ट सोसाइटी, द पर्पज इज नेवर अ कमर्शियल. ओके, अदरवाइज द कमर्शियल पर्पज होता तो अगर सपोज दिस मच स्पेस वी रेंट आउट विल मेक 10 टाइम्स मनी देन व्हाट वी मेक फ्रॉम द एग्जीबिशन. सो बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का पर्पज ही अलग है कि टू मेक द प्लेटफॉर्म अवेलेबल फॉर द आर्ट and then any artist from anywhere. So that is what is happening. If you take Bombay Art Society का हमारा भी 133rd exhibition is coming, 132nd exhibition हमारा लास्ट जनवरी में हुआ. You can imagine 132nd 132. तो it started 132 years back in 1889. The exhibition started. Till that time every year it happens except couple of years in First World War or I think in famine or something. 1-2 साल गैप हुआ है. तो ये शो इतना पुराना है बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का एनुअल आर्ट शो हमारा. अभी दिस आर्ट कार्निवल तो स्टार्टेड रिसेंटली इन डिफरेंट वे. सो इन दैट शो इन द फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ नाउ टुडेज मास्टर आर्टिस्ट लाइक अमृता शेरगिल, एस रझा, प्रभाकर कोलते, जतिन दास, इन द फॉर्मेटिव ईयर्स लाइक दिस यंग पीपल, they have received the award from the Bombay Art Society shows. Now they are masters. It is a different thing. So this process is continuing, and that we want to carry forward that legacy by providing platform to the artists in a very different, affordable way. Plus, see that they reach to the wider people, wider audience. Then, as sir said, that rest of the thing will follow. वो किसको notice करेंगे? Some buyers, some art collectors, some gallery. देखिए कैसा होता है ना, ये system है. The process of art validation or artist validations is very long and complicated in the art field. एक आर्टिस्ट के ऊपर एक बार स्टैम्प गिर गया कि यस ही गेट सक्ड इनटू द मेन स्ट्रीम. मेन स्ट्रीम मतलब कैसा, जैसा इन्होंने कहा, सपोज ये बुद्धा की पेंटिंग है, सम गैलरी गाय कम्स हियर और सोशल मीडिया पर नोटिस कर लेता है, या व्हाट देयर आर सो मेनी बायर्स फ्रॉम माय रोस्टर हु लाइक दिस काइंड ऑफ आर्ट वर्क. तो क्या करेगा, सीधा आर्टिस्ट को कांटेक्ट करेगा, सेंड मी योर 20 आर्ट वर्क्स, आई विल कीप ऑन सेलिंग यू नाउ, डोंट गिव टू एनीबॉडी. फिर वो किसी को देने नहीं देते. The day comes, that day it clicks, as he said. तो आपका काम ओवर. Till that time, enjoy doing art. जैसा इन्होंने कहा, आर्ट तो एंजॉय के लिए है ना, जो भी है, म्यूजिक भी है, you enjoy it. स्पोर्ट्स भी हम लोग जो सीखते हैं स्टार्टिंग में, तो चलो हेल्थ के लिए सीखते हैं, कुछ लोग हेल्थ बनाने के लिए सीखते हैं, कोई ऐसा सीखते हैं, बाद में तो मेडल तो फॉलो होता है, तो 20 साल बाद. राइट अगेन. Next show is in October. Exact dates, Amol, I think on the website it is declared. So next art carnival is in October first week or second week, I think. That's it. So this year there were one in the May, now and October. And then we have our annual art show, which is a very big show, which happens in the month of Feb, I think. Feb. Okay, sir. Thank you so Yeah, much. thank you. Bombay Art Society. बॉम्बे आर्ट सोसाइटी तो इतनी पुरानी है, इतनी फेमस है, और हमें तो पहले पता लगा था कि ये जहांगीर आर्ट गैलरी में इनका ऑफिस था ना, वहीं से हमें मालूम पड़ा था लॉन्ग बैक. मैंने MFA किया था 1981 में, और 1979 में 78 में मेरे को अकबर पदमसी जी ने अवार्ड दिया था. ये मेरा जो वर्क है, ये सारा स्प्रे वर्क है, इंक ऑन कैनवस. और यहाँ से मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर राजेंद्र पाटिल जी हैं जैसे, और बाकी सारे लोग आए हैं, तो बहुत फेमस जगह है और बहुत अच्छा काम है, यहाँ से रिजल्ट्स निकलेंगे इसके. तो इसलिए मैंने सोचा चलो हम भी पार्टिसिपेट कर लेते. वैसे तो मैं बहुत पुराना आर्टिस्ट, आई एम 70 ईयर्स, तब से मैं काम कर रहा हूँ. बस इससे ज़्यादा और क्या बताएं कि दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर एवरी आर्टिस्ट. Thank you, sir. Thank you, sir. Frankly speaking, this is my first time यहाँ exhibition करने मिल रहा है, and I'm very happy that I'm getting this platform कि यहाँ इतने बड़े stage पे मुझे करने मिल रहा है. This is just a beginning for me, but I think it's a stepping stone for me, and I'm very happy that ये Bombay Art Society, they are providing this platform for the budding artists and upcoming artists. So I'm very happy about it. Thank you. Thank you so much. This is my first time showing my artwork in Mumbai. Previously, I have shown my art in like Delhi, Kolkata, and other cities. Like I have done my solo show in like Baroda also.
But over here, I'm looking like something different. Since I have like shifted to Mumbai, I'm looking for like how art thing happening in like Mumbai. So Bombay Art Society is like good platform. So I thought of like let's explore over here first, and then let's see how city is like working in terms of like art. Film industry we know a lot. Being a designer, I know like media how it's working, but in art, I'm still exploring. Thank you so much. Hello, I'm Tejashree Kohli. I have put an exhibition in the Bombay Art Society. This is the very first time that I've gotten an opportunity to put up an exhibition in Mumbai. And I'm not expecting a lot. The only thing I feel that people should come and see and feel my paintings and just live through it. And yeah, if I make a sale, well and good, nothing bad about it. But for now, I feel that people should come and see and feel my painting. Yeah, that's all. Thank you so much and all the best. Thank you. Present the exploration of intersection between science and spirituality. And So how it's was a- your experience presenting your paintings? It's a very great experience. I really learned something over here when I came. What is your expectation from you? I had very great expectation. Very nice project. Whatever he is doing, it's very nice project. Thank you so much. पहले तो माय नेम इज़ अंजलि, आई एम फ्रॉम गुड़गांव और बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है यार। मैं फ़र्स्ट टाइम बॉम्बे आई हूँ फॉर एग्जीबिशन और मैं थैंक यू बोलूँगी राजेंद्र पाटिल सर को, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म आर्टिस्ट के लिए बनाया है जहाँ पे हर कोई आके अपनी आर्टवर्क को डिस्प्ले कर सकता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, आगे ग्रोथ मिलती है और हम लोग अपने आर्टवर्क को डिस्प्ले करके अदर आर्टिस्ट को भी हम अपना काम दिखा सकते हैं।